Hello everyone, welcome to our YouTube channel Baran Academy. Moodle tutorial series के इस वीडियो में in continuation to our previous videos we are going to discuss about three more categories of questions. Namely, those categories of questions comes under the drag and drop category. Okay, so drag and drop category of questions that we are going to discuss. Okay, so let's start. You have to first click on create a new question, and then you can see that in your drag and drop type of questions there are three different categories of drag and drop. One is drag and drop into text, drag and drop markers, and then drag and drop onto image. Okay, so we will see what are these three categories. So let's go one by one. So if I select drag and drop into text, you can understand by its description that with the use of such kind of questions, you are asking the students to fill the missing words with the question text. Okay, by using the concept of drag and drop. Definitely we'll see how the drag and drop works. So just click on add. Okay, so we will write the question name, then question text. So as part of question text, I'm just copying and pasting content from the internet. Okay, let me just change the formatting. Since I copied it from internet, some of the letters are bold. Now all the paragraph that you see over here, this is our question. Now what we want is that we the student has to fill by using the drag and drop functionality on in some of the blanks. So we have to specify those blanks. Okay, so like one of the blank is, let us suppose if I give this software as one blank. Okay, so how we can give blank? You need to specify two square brackets, and in that you have to specify this is your first blank. Okay, and this first blank's answer should be given over here. You can see choice, and you have to specify your choice number one in two square brackets. So the answer is this. Okay, now next is, if I say it is a quantitative measure. Okay, so I will just give this quantitative as my second blank, and then specify this as part of my answer. And I can give third is the name of the scientist. So herein I will specify 3 as my third blank. Fine. Now let's save and see what happens. Okay, so my question is ready. Let me go to the preview and see how my question behaves. So you can see that I can just pick up software and just drop it there, then quantitative and drop it here, and Thomas J. McCabe this third answer and drop it here, and then submit and finish. I can see that I got full marks. Okay, now a few things that I would like to specify is the change in some of the settings. Okay, so first of all, the first setting, so default marks, since I am giving three different blanks to fill, I can specify that 3 marks will be provided if you will fill, so 1 mark for each blank. Okay, so 3 marks in total. Second setting, what we can do is, if you observe carefully, so your answers were coming, that means the answers that you have to drag and drop. So वो सारे answers कैसे आ रहे थे? वो sequentially आ रहे थे in the same way in which the blanks were given. So if you want that you have to shuffle, then you have to click on shuffle, this particular option. Okay. Now next is, you see, uh, if may be possible that sometimes you have to specify, let us suppose software term 2 or 3 times. ऐसा हो सकता है कि सॉफ्टवेयर 3 बार आपको स्पेसिफाई किया जा रहा है इन योर क्वेश्चन,
और तीनों बार आपको अलग अलग कहीं पे आपको ब्लैंक फिल करना है विथ टर्म सॉफ्टवेयर। सो इन दैट केस आप यहाँ पे इसको अनलिमिटेड पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा कि यू विल बी गिवन 3 times to work on that particular more than one once you can drag and drop that particular um, item. Okay, so let's save and do the same with the use of preview. Okay, so let's preview it. So now you can see that it is so I will just put it here, drag and drop here, quantitative can be dragged and dropped here, and software can be dragged and dropped here. Now you can see that I have one more software over here, है ना? So unlimited number of times I can specify that particular item to be dragged and dropped in some of the blank spaces. Okay, so this is how you can allow your so students, this is a hint for the students also. स्टूडेंट्स को ये हिंट मिल जाएगा कि अच्छा हो सकता है कि सॉफ्टवेयर मोर देन वंस यूज हो रहा है। समटाइम्स यू कैन इवन इनेबल सच फीचर्स जिससे कि स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो एंड with that confusion they can not confusion I should say स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आप डिफिकल्ट कर दे रहे हैं ये समझने में कि सॉफ्टवेयर एक बार यूज होगा या 2 बार यूज होगा इन योर ब्लैंक स्पेसेस, है ना? सो ऐसे आप सारे अपने टर्म्स के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप सबमिट एंड फिनिश करें, आप देख सकते हैं कि आपका एक आंसर सही है, सॉरी 2 आंसर सही है, एक आंसर गलत है जिसके कारण आपको 2 out of 3 मार्क्स असाइन हुए हैं। ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल्सो गिवन ओवर हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज वी नीड टू चेक ना, यहाँ पे जो आपको टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप स्टार्ट अगेन कीजिए, आप देख सकते हैं कि आपके टर्म्स जो है वो क्या हो गए, दे आर नॉट इन द सेम ऑर्डर, है ना? तो आपने क्या किया था इसके लिए, आपने यहाँ पे सेटिंग्स में जाके और ये जो आपका फीचर था शफल, इसको सेलेक्ट किया है, तो अभी क्या है आपकी जो टर्म्स है वो शफल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ग्रुप इज गिवन ओवर हियर, है ना? सो एवरीथिंग इज ग्रुप ए एंड समथिंग लाइक दैट। अभी क्या होता है कि ऐसा हो सकता है कि आप एक की जगह 2 या 3 पैराग्राफ्स स्टूडेंट्स को देते हैं, है ना? एंड इन दोज पैराग्राफ्स यू कैन जस्ट give certain things to drag and drop, certain terms to drag and drop. Like let's take another term, another paragraph. I am just copying it from internet and pasting it here. Okay, so I can specify here my fourth space, and let us suppose I am specify execution as my fifth one. Okay, so मैं बॉक्स को यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, एंड जो मेरा एग्जीक्यूशन है, ठीक है, इसको मैं स्पेसिफाई करता हूँ माय फिफ्थ ब्लैंक। Okay, now let's do one thing. So I'm just clicking on unlimited for all so that the students may also feel difficulty in answering this question. ठीक है, मैं सेव चेंजेस किया मैंने, अब मैं प्रीव्यू में जाता हूँ एंड नाउ यू कैन सी ओवर हियर दैट सबसे पहले तो क्या है कि आपका पूरा, सिंस आई हैव टेकन 2 डिफरेंट पैराग्राफ्स, करेक्ट, अभी क्या है यहाँ पे मैं एक ही कलर में सारे जो मेरे टर्म्स हैं दैट आई नीड टू ड्रैग एंड ड्रॉप, इट इज गिवन। ओके, अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ दैट ऑल्सो आई कैन डू। उसके लिए क्या है, मैं एडिट क्वेश्चन में जाता हूँ एंड सेकेंड जो मेरा पैराग्राफ है यानी फोर्थ और फिफ्थ चॉइस, उसके लिए मैं ग्रुप बी असाइन कर देता हूँ। नाउ लेट्स सेव द चेंजेस। ओके, प्रीव्यू माय क्वेश्चन। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 3 ब्लैंक्स व्हाइट कलर में है एंड नेक्स्ट 2 ब्लैंक्स आर इन शेडेड कलर। सो what is happening over here, now the students can understand कि भाई ये जो 3 स्पेसेस हैं, वाइट स्पेसेस, यहाँ पे मुझे
ये 3 टर्म्स में से ही सेलेक्ट करना है, एंड दीज 2 बॉक्सेस आई नीड टू सेलेक्ट फ्रॉम एग्जीक्यूशन एंड बॉक्स दीज 2 टर्म्स, शेडेड टर्म्स, है ना। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को भी इजी होगा टू अंडरस्टैंड कि नाउ दे हैव फिनिश्ड, फ्रॉम हियर दे हैव टू सेलेक्ट। तो अभी क्या है कि कई बार कई इंस्ट्रक्टर्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, स्टूडेंट्स को ये भी हमें नहीं देना है, कुछ डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे कि सबको वाइट कर देंगे। दैट कैन ऑल्सो बी डन, बट समटाइम्स ऐसा कई बार ऐसा होता है कि भाई हमें स्टूडेंट्स को इन सर्टेन केसेस हम असाइन करते हैं कि भाई इसमें से इन टर्म्स का यूज करो, एंड फॉर दीज ब्लैंक्स यू यूज these terms, like if I say execution to be going over here, it will never go. The software to be going here, it will never go. The quantitative to be going here, no, but software can go here, the box can go here, है ना, the execution can go here, correct, the white color can go here. Okay, so what is happening over here, we are trying to divide them into two different groups based on the type of questions we are going for, and then if I submit and finish, I can find that my question is marked correctly, है ना. So this is the way with which you can go for drag and drop text kind of question. Okay, now there is another category of question that is known as drag and drop markers. Okay, now, what is the characteristic of this kind of question? So, let us suppose you have a background image. कोई एक background image आपको दिया हुआ है. अब आप क्या करना चाहते हैं? Background image पे कुछ markers हैं जिनको आप specify करना चाहते हैं. Okay, some markers are given and some background images are given. जैसे कि होता है ना कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का बायोलॉजी में हम जो है डायग्राम देखते हैं, करेक्ट. अभी क्या होता है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में लार्ज इंटेस्टाइन इज देयर, स्मॉल इंटेस्टाइन इज देयर, दिस इज योर स्टोमक, दिस इज योर पैंक्रियास, है ना. तो वहां पे क्या होता है, हम अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि यू जस्ट लेबल दिस इन द डायग्राम, सो आई कैन इन द exam I can give a question and the diagram, and the students are going to drag and drop those markers on the images, background image. So first of all, it is required that this particular type of question requires that you have a background image that is already uploaded. Also there is a note over here that says that, see, अभी क्या है, यहाँ पे इमेज की जरूरत पड़ रही है ना, so the students who are visually impaired, जिनको देखने में तकलीफ होती है, so this kind of question is not for them. Okay, so you have to be careful while creating such kind of question. Okay, so let's create this kind of question. Drag and drop marker, just click on add. When you click here, question name you can assign as drag and drop markers. Okay, then you can write the question like label the diagram or label the figure, I should say. Okay, and then you can give a default mark like 3 marks, 3 different labeling I require, let us suppose. Okay, and you have to drag and drop certain images. Okay, so just you can just click over here, choose a file. You can choose a file. For that you have to go, so my file is on desktop, so this is the file I'm just uploading here. Okay, you can see that जैसे ही मैंने अपलोड किया वो इमेज मेरे पास यहाँ पे अब अवेलेबल है. ओके, नाउ वी नीड टू क्रिएट द मार्कर्स, है ना. अब क्या है कि इमेज स्टूडेंट को है, नाउ वी वांट कि एट एट द टाइम ऑफ गिविंग द एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स को मार्कर्स भी अवेलेबल कराए जाए, है ना, जिन मार्कर्स का यूज करके दे विल लेबल इट. So those markers, so let us say one of the marker is a node, second marker is root node, third marker is let us suppose edge. Okay, so I am going for these kinds of markers. Definitely I am going to shuffle, है ना. Every time the question is attempted, these markers need to be shuffled. Okay, now number of times. Okay, so you see you can select here now, you want infinite number. This is similar to what we discussed in our drag and drop text, unlimited number of times, so infinite number of times, or once. So for instance, let us suppose that I have how many number of nodes I have here, 5 number of nodes, है ना. so आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास 5 नोड है ना. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं 5 टाइम्स दे देता हूँ.
भाई 5 times the node can be specified. Similarly, root node. How many roots of nodes are there? Only one root node is there, let us suppose. Okay, so once only. How many edges are there? So let us suppose how many edges are there. So there are a lot of edges now. So 5 into 4. So what we can do is, let us suppose I keep it as infinite. Okay, and then I go to the drop zones. Okay, so or else I want to specify only one edge, only one edge. So we can go for or unlimited. Why? Because there are a lot of edges. So let us go with infinite. है ना? What kind of in drop zones? What kind of shapes do you want? Okay. So let us suppose it is a rectangle I want. For which marker? For node. Let us suppose I want again a rectangle. So you can select between circle, polygon और rectangle. ये तीन shapes आपके पास available है. आप इनमें से कोई भी एक shape का use कर सकते हैं. ठीक है ना? मैं rectangle का use करता हूँ. ठीक है, रूट नोड के लिए मैं रेक्टेंगल का यूज करता हूँ, लेट अस सपोज एच के लिए. ओके, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि अब आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ मार्कर्स यहाँ अवेलेबल है. मैं इस पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं दिस इज व्हाट, दिस इज एन एज. ओके, so I can just specify an edge over here. Okay, then I can select from here, and this is my root node. Okay, so I will specify my root node as this one. Then again you can see that this is my node, so I will specify a node over here. Okay, now this is what the answer should look like na, node, root node, edge. Okay, now I can just, you can see ना कि भाई मेरे पास coordinates आ गए. अब इन coordinates पे अगर मुझे जो है answers मिलेंगे then only it will be matched. ठीक है, तो इसके बाद क्या कर सकते हैं, एक मल्टीपल ट्राइज का कंसेप्ट है. अगर आप मल्टीपल ट्राई कर रहे हैं तो वहां पे अगर आपका पहली बार इनकरेक्ट हुआ है, सो यू हैव टू गो फॉर a penalty of 33.33% or else whatever kind of penalty you want from the drop down list. ठीक है, now I'm going to save the changes. हमने सेव कर लिया अपने क्वेश्चन को. अब हम प्रीव्यू करके देख लेते हैं कि हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप मार्कर दिखता कैसा है. अब आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे मार्कर्स अवेलेबल हैं, आपके पास यहाँ पे क्या अवेलेबल है, all the nodes and that particular background image. Now I need to go and label. So root node मैं जाता हूँ और यहाँ पे ऐसे लेबल कर देता हूँ. ठीक है, edge, edge needs to be labeled like this. ठीक है, or else I can go over here, है ना, edge. Now you can see ना मैंने infinite number of times दिया है, correct. Node, so I can go and specify this as a node. So this, how many number of nodes are there, 5 number of nodes are there. तो मैं 5 नोट्स को ऐसे स्पेसिफाई कर सकता हूँ. ठीक है, 5 नोट्स को स्पेसिफाई कर सकता हूँ. अब आप देख सकते हैं मेरे नोट्स बचे नहीं क्योंकि मैंने सारे नोट्स को स्पेसिफाई कर दिया. ठीक है, वैसे ही मैं एजेस को भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ. ठीक है, जितने एजेस हैं उस सारे एजेस को स्पेसिफाई कर देता हूँ. ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू सबमिट एंड फिनिश. ओके, आप देख सकते हैं I got 0.60 out of 3. Why is that the reason? Because my answer is partially correct. You have correctly selected 2. है ना. अभी क्या है कि मैंने जिस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे जाके मुझे जो है वो स्पेसिफाई करना था मैंने वो नहीं किया है. दैट इज वाई माय आंसर इज इनकरेक्ट ओवर हियर. ठीक है, तो अभी क्या है कि मैं अगर ऑल द एजेस के लिए मैं ये एजेस को असाइन कर देता, सो उसके तो उससे क्या होता है कि ये सारे एजेस को भी वो करेक्ट ले लेता. ठीक है, अभी मैंने क्या किया था, ओनली वन एज असाइन किया था. सो आई गेव यू अ वे विथ विच यू कैन एक्चुअली create a question with the use of drag and drop. I told you with the use of drag and drop markers how you can just create markers and ask your students to place those markers by dragging and dropping on your background image. Okay, now next question or type of question rather I should say is drag and drop onto image. Okay, so now what is important over here, again for visually impaired student it is very difficult, जिनको देखने में तकलीफ है ये
क्वेश्चंस, इस टाइप का क्वेश्चन उसके लिए नहीं होता है, ठीक है। सो ड्रैग, what you have to do is you have some text labels or images that you want to drag and drop onto the drop zones on the background image, ठीक है। उसके लिए मैं ऐड करता हूँ, नया क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ, है ना। मैं उस क्वेश्चन को नेम कर देता हूँ, व्हाट इज द नेम, ड्रैग एंड ड्रॉप इमेजेस, ठीक है। लिख देता हूँ लेबल द इमेज, है ना। दिस इज माय क्वेश्चन, सिंपल है। मैं यहाँ पे लेट अस सपोज मैं 4 मार्क्स असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अगेन आई नीड टू सेलेक्ट अ फाइल, क्योंकि इसके लिए क्या है, इमेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मैं डेस्कटॉप से एक फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके, अपलोड कर देता हूँ उसे। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने अपलोड किया है मेरे पास एक इमेज ऑफ अ हाउस इज देयर, ओके। आप देख सकते हैं किस टाइप के फाइल्स भी आप अपलोड कर सकते हैं। आप जीआईएफ अपलोड कर सकते हैं, जेपीजी, जेपीजी, पीएनजी, एसवीजी, एसवीजी जेड, सच काइंड ऑफ फाइल्स यू कैन अपलोड, दीज आर द एक्सेप्टेड फाइल टाइप्स, ठीक है। मैंने अपलोड किया है। अब व्हाट आर द ड्रैगेबल आइटम्स, ठीक है। तो मैं वो आइटम्स क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं सबसे पहले तो मैं शफल करना चाहूंगा, ठीक है। एंड व्हाट आर द ड्रैगेबल आइटम्स, ओके। लेट अस सपोज कि मैं कुछ नेम्स दे देता हूँ, टेक्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई वांट टू गो फॉर, देयर आर टू थिंग्स ना। अगर मुझे कोई इमेज इसके ऊपर ले जाके ड्रैग करनी है तो आई विल गो फॉर इमेज, आई हैव, आई डोंट वांट इमेज नाउ, आई वांट टू गो फॉर ड्रैगेबल टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि इस टेक्स्ट का डिटेल दे दूंगा, लाइक विंडो, ओके। एंड एट द सेम टाइम second draggable item is, let us suppose again a text, I am saying Porsche, okay. Then in my figure there is a roof, so third item is again a text and it says a roof as my draggable item. And then what else, door, correct, or I should say lawn, है ना। So fourth item is, let us suppose, a lawn in front of my house, okay. So four draggable items are there. Now what are the drop zones that we have to select, okay. So what is the draggable item? So first is the window, okay. And where do I want it to be dragged? So I can just take it here and drag it over here, okay. This is my window. Then second is, let's go to the drop zone. Second is my porch, third is my roof, fourth is the lawn. Let's drag and drop and see what happens. So so next is lawn, so I will just take it downwards and place it above the lawn or garden, very small. Then comes the roof. So roof, which one is roof? This is my roof, placing it here. And porch, porch is in front of my door, okay. So this is my porch, okay. So this is how I have specified the drop zones, है ना, where they need to be dropped, okay. So ड्रॉप जोन जब हो गया है, मैंने आपको मल्टीपल ट्राइज के बारे में बता ही दिया है लास्ट टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस में. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सेव द चेंजेस, ओके, एंड देन वी विल गो टू सी द प्रीव्यू, ओके. तो आप देख सकते हैं मेरे पास इमेज अवेलेबल है एंड मुझे वो जोन्स बताए गए हैं जहां पे मुझे इमेजेस को फिल करने हैं बाय ड्रैगिंग फ्रॉम हियर एंड ड्रॉपिंग there, okay, like lawn is there, roof is here, porch is here and window is here. So जब मैं क्वेश्चन बना रहा था तब हो सकता है आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये भी आया हो कि सर विंडो तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऑल सो मेनी विंडोज आर देयर. तो अगर मैं क्वेश्चन एग्जाम के समय में जब अटेम्प्ट करूंगा तो हो सकता है मैं इस विंडो को ना करके यहाँ पे सेलेक्ट करूं, है ना. तो मैंने इस विंडो को ही यहाँ पे जो है असाइन किया है, तो वो आपको एग्जाम के समय में कंफ्यूजन नहीं होगा स्टूडेंट्स को, ठीक है. तो
अगर मैं एक और यहाँ पे देता हूँ इस तरीके से, मैं सो मेनी मार्कर्स आई कैन क्रिएट, ओके, और आई शुड से ड्रॉप जोन्स आई कैन क्रिएट, है ना। और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सबमिट एंड फिनिश। यू कैन सी दैट आई गॉट 4 आउट ऑफ 4, है ना। सो ये क्या मैंने आपको बताया, आपको ड्रैग ड्रॉप है। तो आज हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या सीखा कि ड्रैग ड्रॉप कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, आप अपने ड्रैग ड्रॉप टेक्स्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, ड्रैग ड्रॉप मार्कर्स क्रिएट कर सकते हैं, ड्रैग ड्रॉप इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, ओके। सो so on the basis of this, you can practice, you can create questions for the students or for your own students, and I'm going to discuss more category of questions in my next video. Till then, thank you very much. Have a nice day.